Hello everyone, my name is Kanav and I have secured an All India rank of 2 in ALA 24 examination. And in this video, we'll cover the logical strategy, ideal logical strategy. So इस बार का logical was a very big shocker for a lot of people क्योंकि analytical आ गई थी and इतने सालों से critical reasoning ही आती थी तो फिर it was like a very big shock. And इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो एक बहुत अच्छे analytics deserve करते थे, they ended up getting not a single hit. So, exactly what should be your logical strategy? So, पहले समझो logical is divided into two parts. Number one is critical reasoning, and the other is analytical reasoning. So, critical reasoning is your passage given होगा, उसके ऊपर questions, assumption, strength and weaken ये सब, कि वो passage पे ही होगा. That is like English, जैसे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे ना वैसा सही, उसमें हमें बस थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस लगा है. दूसरा is analytical reasoning. So analytical reasoning is things like sitting arrangements, right? कि 8 लोगों को साथ में बैठाना है, A B के साथ नहीं बैठ सकता, ये सब directions, ये सारी चीजें. तो we'll cover both these things in the video. So पहले I'll just say कि in this video we'll be covering 3 major things, and number 1 is resources, number 2 is concepts, and number 3 is practice. So और ये 3 चीजें आपको करनी होती है to ace any subject of CLAT. सबसे पहले रिसोर्सेज. सो आप ये देखो रिसोर्सेज में what so like there are two types of resources. One is for the concept and the other is for the practice. Okay? So first concepts के लिए for logical critical reasoning I'll say विली का की बुक है बाइबल टाइप विली जीमैट बाइबल, उसको पढ़ो. दैट इज लाइक वेरी गुड क्योंकि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, फिर उसके क्वेश्चन भी उसके ऊपर. तो इट्स लाइक नाइस प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट थिंग. So that is for critical reasoning. Second, for analytical reasoning, I'll recommend Arihant की एक analytical reasoning की बुक आती है, या अगर वो नहीं करना तो फिर you can definitely do M.K. पांडे. So ये दो चीज़ें हैं, इनमें से आप देख लो आपको जो भी सही लगता है. मतलब ये दो हैं, इनको करना ही है आपको, both for critical reasoning and analytical reasoning. So this is your sources broadly. Second, on to concepts. तो अब एक चीज़ समझो, concepts are like the foundation upon which you will build a building, and building will be made by practice, but the foundation should be strong. So concepts सबसे पहले करने is the most important thing. और इसके लिए I'll say कि अगर मतलब use the resources which I mentioned, but उसके अलावा YouTube पे there's like a lot of good and free resources. So use those as well. That will be very helpful. And at the study anchor also we have made a course called as CR bullets. So you can definitely go through that as well. We'll attach a link in the description. So that has been made by me, and उसमें critical reasoning के सारे concepts are covered. So it's like a पूरा comprehensive course on the concepts of critical reasoning. So you can definitely go through that. So yes, concepts are important. Resources I mentioned. Now moving on to third and the most important thing, practice. So practice में I'll recommend firstly you start off with sectionals. Then you go to sectionals of previous year paper. मतलब previous year paper CLAT का सिर्फ logical करा. Then you move on to full length box, और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कहीं नहीं होती. So इसलिए प्रैक्टिस भी like अपने लेवल पे देखो. When you're beginning, sectionals. When you're intermediate, then sectionals from last previous year papers. Then finally previous year मतलब mocks. और मॉक्स में भी यू नो कि कुछ कोचिंग बहुत डिफिकल्ट बनाती है, कुछ कोचिंग बहुत ईजी बनाती है, तो उससे थोड़ा टेलर भी कर लेना कि पहले ईजी मॉक्स से शुरू करो फिर हार्ड. फिर व्हेन द पेपर इज क्लोज गो बैक टू जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक्स, पूरे फुल लेंथ मॉक्स की तरह से. तो चाहे आई नो कि आपको आंसर इंग्रेन हो गया होगा, बट स्टिल यू नीड टू गो थ्रू दैट एक्सरसाइज. सो यस, दैट इज द वे टू गो थ्रू लॉजिकल इन जनरल. यही होता है, प्रैक्टिस करो और अप्लाई करो, और concepts बस clear होने चाहिए. So it's not rocket science. And yes, that is pretty much it about logical. If you have any questions, you can definitely ask them in the comment section. And if you want to connect with us, then we have the contact details in the description box. Thank you. All the best.